concept of will बढ़ा दो और सोचो कि everyone is a part of that family or one family. So that is why the peaceful world is possible only when we have this vision of world is a family. So long you will see, why do we fight? Because we see everyone else in the world is fighting. So we are fighting. We never think that land is so important, or land is important, or a people are important. Can you create the endless rivalries, or you can create the permanent bonding? The choice is yours, but your thinking is constrained. तुमको ऐसे लगेगा कि हम टेरिटरी लूज करके किसी को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेंगे. क्यों? क्योंकि सिस्टम है. Why you think you have to fight? Because you look at others and others are fighting. Then you think I also have to fight. But you never think, and you develop a means to fight without thinking that whether fight was really needed or not. Fine. So if you can act with a real will, where you find that the other person is a part of you, you have no reason to fight. So you have to own your enemy. आप आपके एनिमी सिर्फ आप है. एनिमी एनिमी नहीं है आपका, आप अपने एनिमी हैं. ठीक है. तो गांधी क्या कहते हैं? माई एनिमी इज अ पार्ट ऑफ माई सेल्फ. सो इफ यू वॉन्ट योर enemy not to do enmity towards you, then what Gandhi says, be the change you want to see in others. अगर आपको किसी को दोस्त बनाना है तो पहले आपको उसका दोस्त बनना पड़ेगा. आप उसका एनिमी बन के उसको दोस्त नहीं बना सकते. एंड पावर इज नेवर अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, बिकॉज पावर इज अ रिलेटिव सम गेम. And what Hobbes says, everyone has a big or small, every person has a equal capacity to kill. Some will kill by their power, and some has a capacity to kill by their connivance. ठीक है. तो कोई छोटा देश भी छोटा नहीं और बड़ा देश बड़ा नहीं. ठीक है. ये तो मौके की बात है. यस. अब मेन चीज है, तुम लोग कॉन्स्ट्रेंड हो. तुम ये सोच ही नहीं पाओगे कि कैसे लैंड फॉर पीस हो सकता है. तुमको लगेगा कि लैंड को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट पीस है. तो लैंड के चक्कर में इतना सारा जो भी लैंड है, मान लीजिए कश्मीर है, उसके चक्कर में यू हैव मेड द न्यूक्लियर वेपन्स. इसीलिए गांधी ने कहा भैया लैंड दो, पीस लो. ठीक है. क्या करोगे लैंड का? ठीक है. सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? दिस थिंकिंग इज रिक्वायर्ड. फाइन. सो राइट नाउ सपोज इफ यू हैव वॉर विथ पाकिस्तान. फाइन. सो will the war or the victory is worth it? That needs to be understood. So again, what you require, not just an instrumental reasoning. You just thought that we have to get the POK back, and the nuclear weapons can be the means to get it back. But you are not thinking the desirability of getting it back. You are not thinking the cost and benefit. You have end up paying huge cost of maintaining the rivalry. But can you opt for peace? Not possible, because leaders' choices will be constrained by the structure. What structure will constrain any leader who will go for peace? The domestic public opinion. Fine. The international opinion. Any leader who will talk about peace will be assassinated.
any leader will survive if we talk about war. So in case of Israel Palestine, all those leaders who tried peace, they have been assassinated, and those who just keep on uttering fire, they will remain in power, but they will remain all the time under power, under fire. तो ये सब थिंकिंग है कि लोग क्यों नहीं सही एक्शन ही नहीं हम ले पाते हैं, because our action is constrained by the structures in which we live. So what is needed to be changed? The material structure, the ideological structure. ठीक है, तो वॉर का परिणाम क्या होता है? देयर इज नो विनर इन एनी वॉर. ठीक है, अल्टीमेटली इफ यू टेक द स्टोरी ऑफ महाभारत, वॉर हैपेंड फॉर लैंड, एंड आफ्टर वॉर what you will enjoy when there is no one in the family to celebrate your victory. And then after the war, when the Pandavas, they kept on ruling, after ruling like Buddha, you feel disenchantment, you leave and go. Fine. So again, there is a message in every war, the structures. Why can't peace be talked about? And can peace, they can ask you questions on what is your approach to deal with the problem of Pakistan. आप पाकिस्तान को कैसे डील कर सकते हैं? There is only one way to make them friends, and you have to invest in friendship. Otherwise, there is no way you will move in a path which is itself is suicidal. फ्रेंडशिप के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है. हाँ, वो लॉन्ग टर्म है, प्लस यू नीड लॉट ऑफ कैपेसिटी टू थिंक अबाउट फ्रेंडशिप. इट यू विल बी स्केयर्ड टू थिंक. आप पहले सुन लो, आपको डर लगेगा, आप सोच ही नहीं सकते. मैम, पहले सुनने का काम करो. बड़े बड़े लोगों की बातें बता रहे हैं एक जगह सम्मिलित करके. ठीक है, अब वही चीज है जैसे पैट्रियार्की एक स्ट्रक्चर है, and you fear that structure. So one of the feminist scholar, I think Simone de Beauvoir herself, says that patriarchy creates more terror for men than women, because women can even think of dressing like men. Men cannot even dream. अपने में अपना चेहरा बिंदी चूड़ी उड़ी के साथ देखोगे तो उस रात पसीने के साथ आप जग जाएंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पैट्रियार्की that is controlling your dreams also. So it's not possible to even explain to the people what is right. They will ask the question, हमने विश्वास किया था, क्या मिला? तो अब ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? तो मेन चीज ये है कि आप कुछ थियरीज बताते हैं, व्हाई वी थिंक व्हाट वी थिंक. तो आप जो सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि लड़ाई ही हल है? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर that has constrained your ability to think.